हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आल्स के टीवी। तो आज आपके लिए मैं नेक्स्ट क्यू कार्ड लेकर आया हूँ। नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू लर्न नॉट एट स्कूल और कॉलेज। कहते कोई इंपॉर्टेंट थिंग बताओ जो आपने सीखी हो अकेले स्कूल या कॉलेज में नहीं और कहीं जगह पे। ओके, इस क्यू कार्ड में आपको बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। पहले हम इसके क्यूज देखते हैं। ओके, वन, डिड यू लर्न इट? हाउ डिड you learn it? Why did you think it was important to learn it? How do you felt when you learned it? ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी बस कोई भी क्यू कार्ड आ जाए, what, when, how, why and how you felt about it, ये आपने 5 का 5 आपने कवर करनी ही करनी है। कहते आपने कब सीखी थी एंड आपने कैसे सीखी थी। कहते क्या आप सोचते हो कि ये इंपॉर्टेंट है एंड आपको कैसे उनकी फील मूवमेंट आपकी क्या थी आपकी। ओके, अब इंपॉर्टेंट थिंग स्कूल और कॉलेज के अलावा आप क्या क्या सीख सकते हो। कुकिंग हो सकती है, डांसिंग, कोई भी स्किल, चाहे वो आईटी के रिलेटेड हो चाहे इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, कोई भी स्किल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, जो मैंने की है वो मैंने कुकिंग की एक्सप्लेन की है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देर इज़ नो डिनाइंग फैक्ट दैट, ये मैंने फ्रेज यूज़ किया है, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे कि आपको पता है लर्निंग कोई एज नहीं होती, हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। मोस्टली इस कीवर्ड को आप ड्राइविंग के ऊपर भी बना सकते हो। एंड एज एन इनोवेटिव पर्सन आई लव टू ग्रैब नॉलेज रिगार्डिंग एवरी concept. Okay, here I would like to talk about an important thing I have learned not in school or college. That crucial thing is cooking. Actually, I have been interested in cooking since my childhood, so I generally watch cooking videos on YouTube and help my mother with kitchen chores. किचन कोर्स होते हैं जैसे हम किचन के छोटे छोटे टास्क करते रहते हैं, छोटे छोटे काम करना। ओके, I remember 2 months ago, there was my summer vacation. At that time, I was free from my academics, so I have decided to improve my culinary skills. Culinary skills हम cooking skills को ही कह देते हैं. As my mother gifted hand in cooking, she knows how to cook Italian, Chinese, and Indian cuisines. My mother recommended me to learn baking as it is the most important part of cooking. एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कुकिंग, आप यहाँ पार्ट एंड पार्सल का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक सिनोनिम की जगह भी यूज़ करते हैं। ओके, हम सो आई स्टार्टेड टू लर्न बेकिंग फर्स्ट, देन आई लर्न टू कुक इंडियन फूड because I think the cooking is an integral part of every individual life as food is a basic necessity of human beings. Moreover, I want to go overseas for my higher education and having knowledge about cooking would be fruitful for me. Fruitful का मतलब होता है beneficial. Okay. Besides, I followed a few cookery channels on YouTube which helped me a lot. Within a month, I learned all ins and outs. Ins and out कहते हैं कमी and patience इसे हम कह देते हैं. Okay. Of cooking and I felt on cloud 9. On a cloud 9, very happy. Now, I can prepare different cuisines which would be quite delicious. All in all, this is a pivotal thing I have learned from home and social media. ये मेरा आइडिया था, इसके अलावा आपके पास और कोई आइडिया वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे। फॉर मोर अपडेट विद द आइल्स एंड सेंटली आस्क यू कार्ड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।